Hi, good evening, everyone. But in today's class, we are going to take one example, and this is going to be about the catastrophe bonds. Okay. Now, when we talk about insurance, किसी भी transaction में there are two sides to a transaction. One side is the person who is buying, and the other side is the person who is selling. In insurance market also, we have two sides. एक तो हो गया the person who is buying insurance, and the second is the person who is selling insurance. है ना? Today we want to focus in this lecture on the part of the person who is selling insurance. The person who is selling insurance. अब ये selling side insurance का, this selling side is divided in multiple parts. The first part is called as the retail component. It's called as the retail component. बेटा retail component माने जब कोई कंपनी डायरेक्टली एंड यूजर को सेल करे, मतलब I want to buy insurance for myself and I am purchasing it from a company. When you are directly dealing with end users, directly dealing with end users. When you are directly dealing with end users, so that is called as retail component. The other component that we have, but that is called as wholesale component. उसको बोल देते हैं wholesale component. Wholesale component is one where one party is selling to another party. ठीक है, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को बेचा, but this party is not the end user. This party can sell to third party, right? So wholesale component is where insurer, मतलब इसने पहले अपने आप को इंश्योर करवाया, is selling the risk to other party और उसने फिर आगे किसी और को sell off किया, right? This wholesale component is called as reinsurance market. It's called as reinsurance market. So it is not always the case that you are selling to end user. अगर आप end user को नहीं sell कर रहे हो, then you are part of reinsurance market. ठीक है? Reinsurance market में, within the reinsurance market, it is dependent on large investors. The reinsurance market is dependent on large investors, like, for example, pension funds. Right? Which provide financial backing for risk. माने वो क्या कर रहे हैं? जैसे for example, इस केस में एक reinsurance market के केस में क्या होगा? There will be a financial intermediary, like reinsurance company या investment bank. Okay. And this, so it will be the case that suppose there is an insurance company, यहाँ पे एक insurance company है,
कंपनी ने लोगों को नहीं इंश्योरेंस बेची, बट एक बहुत बड़ी फर्म को, जिसे हम बोल रहे हैं री इंश्योरेंस कंपनी, एक बहुत बड़ी फर्म को उसने क्या किया, उसने बेच दिया कि ठीक है, ये लो, ये छोटे छोटे इंश्योरेंस के वो हैं, आप अलग अलग लोगों को बेच सकते हो, हमने आपके साथ ओवरऑल इतने बड़े अमाउंट का एक ट्रांजैक्शन कर लिया कि आपने हमसे खरीद ली। मतलब नाउ दिस इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट हैविंग द हेडेक टू सेल टू द फाइनल कंज्यूमर, इट हैज गॉट द रीइंबर्समेंट, उसको पैसा यहां से ही मिल गया, ही इट हैज गॉट मनी फ्रॉम द री इंश्योरेंस कंपनी। Now, this reinsurance company is involved with the final consumers and selling to them. ये इसका काम है कि वो final consumers को बेचे, right? So this is how this is working, right? Now, within this, तो बेसिकली ये जो रीइंश्योरेंस कंपनी, इट्स अ बिग इन्वेस्टर, इसने एक साथ इस इंश्योरेंस कंपनी से खरीद लिया, जितने में उसने खरीदा वो उससे ज्यादा प्रीमियम पे आगे सेल करेगा, एंड इट विल मेक प्रॉफिट इन दिस सिचुएशन। नाउ reinsurance companies have brought a new product, they are experimenting with the product, and उस प्रोडक्ट को कहा जाता है कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड्स और कैटास्ट्रॉफिक बॉन्ड्स, डिफरेंट पीपल कॉल इट बाय डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। और ये जो कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड्स हैं, these are more flexible ways, better ways, more flexible way to provide reinsurance, ठीक है। अब क्या करना है हमने, अब देखो, सो फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ कंपनी, कंपनी XYZ, ठीक है, ये कंपनी को अपना इंश्योरेंस सेल करना है, राइट। What this company will go ahead and do is it will sell this insurance to a reinsurance company. Now, in this reinsurance company, there will be large investors, बड़े बड़े बहुत पैसे वाले इन्वेस्टर्स होंगे, there will be large investors or large institutions, right? Now, suppose let's say that I am selling insurance, और क्योंकि इंश्योरेंस इज लिंक्ड टू नेचुरल डिजास्टर, माने मुझे कब किसी किसी को कब जरूरत पड़ेगी इंश्योरेंस की, अगर कभी उसका कुछ घर में इशू हो गया, गाड़ी में इशू हो गया, ड्यू टू सम, इट कैन बी ड्यू टू अर्थक्वेक ऑल्सो, हरिकेन ऑल्सो, कुछ भी हो सकता है, राइट। सो दीज लार्ज इंस्टीट्यूशंस, दे हैव बीन टाइड टू नेचुरल डिजास्टर्स, इनको हमने नेचुरल डिजास्टर से लिंक किया हुआ है, they are linked to natural disasters, right, like earthquake, like hurricanes, etc, ठीक है। तो अब अब क्या होगा, एक एग्जांपल के तौर पे देखो जरा, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। नाउ व्हाट विल हैपन, सपोज सपोज हमने एक बॉन्ड इशू किया जिसको हमने बोला कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड, वी इशू दिस बॉन्ड, और हमने बोला कि ये जो बॉन्ड है ना, ये एक इवेंट से लिंक्ड है, दिस बॉन्ड इज लिंक्ड टू एन इवेंट, ठीक है। और ये इवेंट को हमने बना दिया कि दिस इज एन अर्थक्वेक इवेंट, क्या इवेंट है, अर्थक्वेक, ठीक है। एंड नाउ वी आर सेइंग दैट दिस बॉन्ड इज एसोसिएटेड विद एन इंश्योरेंस क्लेम, और इंश्योरेंस क्लेम का अमाउंट है $500 million, ठीक है। इफ देयर इज नो अर्थक्वेक, अगर कोई भी दिक्कत नहीं आती है, राइट, इफ देयर इज नो अर्थक्वेक, देन इन दैट केस जिस भी इन्वेस्टर ने मुझसे ये बॉन्ड खरीदा होगा, उसको मैं बहुत हेवी इंटरेस्ट दूंगी, क्योंकि उसने ये रिस्क लिया ये वाला बॉन्ड खरीदने का, सो इंटरेस्ट विल बी पेड टू
दैट इन्वेस्टर हैवी इंटरेस्ट, हाँ, बहुत अच्छा इंटरेस्ट मिल जाएगा उसको अपने पैसों पर। बट इफ देयर इज अर्थक्वेक, अगर अर्थक्वेक आता है तो हम देखेंगे कि कितने लोगों को असली में नुकसान हो। ये तो टोटल वैल्यू है कि टोटल इंश्योरेंस अमाउंट इतना हमने रखा था, इतने लोगों का हमने टोटल इंश्योरेंस किया था, दिस इज द अमाउंट वी इंश्योर्ड। बट जरूरी नहीं है ना दैट एवरीवन विल एक्चुअली हैव इश्यूज, राइट? सो वी विल सी दैट हाउ मेनी क्लेम्स केम, ठीक है? एंड इफ जो लोगों ने जो क्लेम किया है वो ज्यादा है देन द अमाउंट ऑफ बॉन्ड, इससे भी ज्यादा अमाउंट से, 500 से, राइट? देन जिस इन्वेस्टर ने खरीदा होगा, whoever investor has purchased it, they will have to sacrifice, let go of their principal amount also and their interest also. समझे? माने इट इज अ रिस्की सिचुएशन कि मैंने एक ऐसा बॉन्ड खरीदा है, आई हैव परचेज्ड सच अ बॉन्ड विच इज एसोसिएटेड टू एन इवेंट। अगर वो इवेंट नहीं हुआ, किसी का भी नुकसान नहीं हुआ, तो मेरे को पैसा मिलेगा। क्योंकि जब आपने लोगों को इंश्योरेंस की, जब लोगों की इंश्योरेंस करी आपने, तो वहां पे आपने लोगों से प्रीमियम तो इकट्ठा किया ही है। उस प्रीमियम से आपसे जो भी आगे बॉन्ड खरीद रहा है, अर्थक्वेक से रिलेटेड बॉन्ड, आप उसको वो रिटर्न दे सकते हो, आप उसको इंटरेस्ट पे कर सकते हो, है ना? बट अगर अगर अर्थक्वेक आता है तो जिसने आपसे बॉन्ड खरीदा है वो लॉस में हो जाएगा। सो इट इज लाइक अ रिस्की सिचुएशन। ये कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड्स रिटर्न बहुत हाई देते हैं, है ना? क्योंकि एक तरीके से इसमें जितनी बारी भी किसी के साथ चोरी नहीं हुई, अर्थक्वेक नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, उतनी बारी जिसने ये बॉन्ड खरीदा उसको रिटर्न आएगा। बट ये रिस्की भी है कि अगर अर्थक्वेक आ गया, अगर कोई हरिकेन हो गया, इफ समथिंग हैपेंस, then you are in a situation which is where you have to let go of your principal and you have to let go of your interest rate. So catastrophe bonds, they are having some very interesting features. The first interesting feature is that the first and very important interesting feature is that they help spread risk evenly, right? And can be subdivided infinitely, where each investor has small part of the risk. तो एक बार थोड़ा और लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। देखो, दीज आर द पीपल बेटा जिनको इंश्योरेंस चाहिए था अर्थक्वेक के अगेंस्ट। दीज पीपल दे वांट इंश्योरेंस अगेंस्ट अर्थक्वेक, वांट इंश्योरेंस। द टोटल मनी दैट दे हैव गॉट इंश्योर्ड, कि अगर अर्थक्वेक आता है तो कितना पैसा उन्हें लौटाना पड़ेगा, दैट इज $500. They have purchased insurance from some company. In return, the company has gone ahead and has spread this risk. ये $500 जो हैं, जो कंपनी को इनको देने पड़ सकते हैं, कंपनी ने क्या किया कि इतने अमाउंट के बॉन्ड्स इशू कर दिए मार्केट में। एंड दीज बॉन्ड्स कैन बी ऑफ वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू। ये बॉन्ड बहुत ही छोटी छोटी वैल्यू के हो सकते हैं। माने आई कैन इशू 500 बॉन्ड्स ऑफ $1 ईच। एक एक डॉलर के 500 बॉन्ड्स हमने इशू कर दिए। सो आई कैन सब डिवाइड इट, इस वैल्यू को जितना मेरा मन करे मैं उतना सब डिवाइड कर सकती हूँ, उतना छोटे छोटे पार्ट्स में आई कैन जस्ट मेक इट। नाउ देयर इज दिस पर्सन, ही गोज अहेड एंड ही बाइज वन बॉन्ड। उसने एक बॉन्ड खरीदा। सपोज इन दिस ईयर वन देयर इज नो अर्थक्वेक, तो ये कंपनी को इनको कुछ नहीं देना, द कंपनी हैज टू नॉट पे एनीथिंग टू देम, बट द कंपनी विल गेट प्रीमियम इन रिटर्न। क्योंकि कंपनी ने आगे ये स्प्रेड किया था रिस्क को इन लोगों के अंडर,
कंपनी ने ये रिस्क नहीं लिया है लोगों को इंश्योरेंस बेच के, कंपनी हैज स्प्रेड द रिस्क, सो कंपनी हैज टू पे रिटर्न। तो ये जो दिस पर्सन जिसका $1 का बॉन्ड था, he will get back $1 and he will get suppose $0.3 as interest, तो he will get back $1.03, वो उसको वापस मिल जाए। In this way, this company will act as an intermediary. Intermediary between what? Between people who don't want to take risk and between people who want to take risk. और इसके बीच में कुछ प्रॉफिट कंपनी विल कीप फॉर इटसेल्फ। ये जो बॉन्ड्स हैं, दीज बॉन्ड्स आर कॉल्ड एज कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड्स। नाउ सपोज year 2 there is earthquake. Now the company has to pay these people money. ठीक है, प्रीमियम तो इन लोगों से हर साल आ रहा है, बट रिटर्न में कुछ पैसा जा भी रहा है। Suppose the money that company has to pay is more than what the company has, तो कंपनी इनको ये वापस नहीं दे पाएगी, it will not be able to pay them back. So year 2 में this person who has purchased $1 of bond, he will get no return. उसका ये $1 भी he will lose, but he is not losing $500, उसको छोटा लॉस ही हो रहा है। The risk that anyone is taking is just small, right? Is this clear? And whatever money the company is insuring, it is already backed up, उतना पैसा वो इकट्ठा कर चुकी है। So the company will never default. कंपनी हमेशा जब भी आपको कोई नुकसान होगा यहाँ पे, इन लोगों को हमेशा पे करेगी, कंपनी will never default. So there is no default risk from the side of company because that money has already been collected by selling bonds. No default risk from the side of companies. From an economist point of view, there is something which is called as CAD bonds. एक चीज है जिसे बोलते हैं CAD bonds. CAD bonds are form of state contingent security. State contingent security. ठीक है, स्टेट कंटिंजेंट सिक्योरिटी वर्ड रीड आउट करो बेटा। स्टेट, स्टेट मींस किस स्टेट की बात हो रही है? अर्थक्वेक, नो अर्थक्वेक, व्हाट फॉर्म ऑफ स्टेट, है ना? सो इवेंट, स्टेट मींस इवेंट। कंटिंजेंट सिक्योरिटी, इट मींस लिंक्ड टू अ पर्टिकुलर इवेंट. So those securities which pay only if a particular event occurs. जैसे अगर earthquake नहीं हुआ तो इनको पैसा वापस मिला, earthquake हुआ तो इनको पैसा नहीं वापस मिला. So those securities means what? Bonds. Bonds means what? कुछ भी रिटर्न, है ना? सो इफ यू आर फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड यू विल नो एनीथिंग दैट इज फेचिंग यू अ रिटर्न, इट इज अ लायबिलिटी ऑफ द कंपनी, जो कंपनी को पे बैक करना होता है आपको. सो दीज सिक्योरिटीज दे आर कॉल्ड कैट बॉन्ड्स एंड दीज आर स्टेट कंटिंजेंट सिक्योरिटी. माने दीज सिक्योरिटीज दे पे ऑफ if and only if a particular event occurs or does not occur. ठीक है, एक event linked return है. And this concept was first launched by Kenneth J. Arrow. It was published in 1952 in his paper, and he thought कि when he published it, he thought कि ये सिर्फ एक theoretical concept है. He considered it as a theoretical concept, right? But later, people actually started using this in the Wall Street and in the exchange market, in the derivative market. So it actually became a practical concept. है ना? असली में हर जगह पे ये यूज होना शुरू हो गया, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेट कंटिंजेंट सिक्योरिटीज. ओके बेटा, थैंक यू.